Hello everyone. We are glad to see the response we have got for looking from home opportunity by When India. We have received more than 60 responses in just a short while, and many of you have already registered with us and started working. So you definitely need applause for it. Today's session will be about Facebook marketing, and it will be an advanced session. But before I talk about Facebook marketing, I will like to talk about business today. In past few months, the business scenario has changed a lot. And if you have a business and you are having your customers, how is your business going now? You can use the chat box next to the video and put your questions over there. As and when I get a time, I will respond to it. And if you are watching this video after the live session, then you can use the comment section and post your queries over there also. So coming back to the topic, how is your business going now? If you are having only your business and your customers know your business, they have been purchasing from you, right? What difference are you making in your business now? How are you trying to reach more customers now? आप अपने बिजनेस में ऐसा क्या डिफरेंस ला रहे हैं जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो करे? आपका बिजनेस है, आपको बिजनेस को ग्रो करना है. आप ग्रो करने के लिए क्या कर रहे हैं? What we should do is, I'll give you an example. We have a store, we have a superstore, and we have a mall. If you have to purchase something, what do you prefer? Where will you go to make a purchase? Before these scenarios, what used to happen, if you have to purchase only one product, you will go to the specific store and make a purchase. But if you have plans of buying few more products, then you will plan to go to a superstore because it is offering more variety to you. And to explore more products, you will go to a mall because it is giving lot of variety to you. That is the reason why When India came up with the concept of e-super mall. We are e-super mall. Why? Because we are not restricted to number of products. We are having variety of products and we are adding more as the suppliers are contacting us and as people like you are suggesting to us. So we are catering more products. Why we are doing it? We are doing it so we are able to provide you more products. So you can add more products to your catalog. अगर आपके कैटलॉग में 10 प्रोडक्ट्स थे, हम आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप उस 10 को आप 20, 30, 40 तक ले जाएं. एंड इफ़ यू आर हैविंग कस्टमर्स फॉर दोज 10 प्रोडक्ट्स, let's say if you are having 100 customers for those 10 products, if you add 40 products, think how many more customers will you cater to? And if you think by adding others product, your customers will stop buying from you or stop buying your product, that is wrong. If you add more products to your catalog, people will come back more to you to make a purchase and that will grow your business. अगर आपकी थिंकिंग ये है कि आपको सिर्फ अपना ही प्रोडक्ट प्रमोट करना है, दूसरे का ऐड नहीं करना है, तो आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. अगर आप दूसरों के प्रोडक्ट ऐड करेंगे, जो कस्टमर्स हैं आप उनको ज़्यादा प्रोडक्ट केटर कर पाएंगे, तो कस्टमर्स आपके पास ज़्यादा आएंगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा. एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन द प्रोडक्ट्स वी आर एज When India, we are providing you products online. Your customers are online, so this is the time you have to take your business online, increase the list in your catalog and grow your business. So coming back to the topic of marketing, what are the general things in Facebook marketing, what everybody will know of? In Facebook we do posting. We make a post and then we reach to the customers. So to talk about Facebook marketing, first and always my suggestion is keep your professional and personal profile different. Do not mix them. If you are having a business, okay, you can share your business post on your personal profile also, but do not keep your personal things keep coming back on the business profile. So first tip is that you should create a business email ID, and from that email ID you should create a Facebook profile for business only. And
When you make post on the business profile, definitely you can add your friends in your Facebook. अगर आप बिजनेस प्रोफाइल भी खोलते हैं तो भी आप अपने फ्रेंड्स को तो फेसबुक में ऐड कर ही सकते हैं. दैट इज़ ऑलवेज गुड, दैट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड. तो आप उनको ज़रूर ऐड कर लें. फिर से अपने फ्रेंड्स को दोनों जगह ऐड कर लें. पर्सनल को अलग रखें, प्रोफेशनल प्रोफाइल को अलग रखें. और जो आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल है, इन दैट वेन एवर यू मेक अ पोस्ट, फेसबुक हैज़ ऑप्शन whether you want to share this post with your friends, friends of friends, or make it public. If it is your business post, then if you are restricting it only to your friends, then you are restricting your business. Make your business post available for all. It means not only for friends, not only for friends of friends, but for everyone. So you reach a bigger area, because your friends are not always your customers. You will have people in your friends list who may like to purchase, but they don't know you directly. So you need to increase your horizon for that. You have to share the post with not only friends, not only friends of friends, but make it public. Okay, this is the first tip. Second tip is use of hashtags. I think everybody is aware of hashtags now. How do we use a hashtag? We put a pound sign and we put a word over there. No space in between. That is hashtag. Why do we use hashtag? Because when you use hashtag, if somebody is searching some similar product on Facebook, all the posts with those hashtags come up in that result. So it helps you whether you have posted for that person or not, but still it will appear in that person's search result. So that's why we should use hashtags. Hashtags are also the food to the search engines. So these hashtags will help you to come in Google search engine, Bing search engine, Yahoo search engine, and other search engines. So you should always use hashtags. Third tip is, when you are using business profile on Facebook and you are using Facebook marketing, you are planning for Facebook marketing to grow your business, you should पोस्ट ऑन योर बिजनेस प्रोफाइल ऑन अ रेगुलर इंटरवल. अगर आप फेसबुक को यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए, तो आपको फेसबुक पर एक रेगुलर इंटरवल में कोई ना कोई पोस्ट आपकी आनी चाहिए. रेगुलर इंटरवल का मतलब डेली नहीं है, हर घंटे नहीं है. इट कैन बी डेली, इट कैन बी every alternate days, it can be once in 3 days, it can be once in 4 days, और it can be bi-daily. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अपडेट कर सकते हैं. तो आपको एक रेगुलर पोस्ट रखनी चाहिए कि हाँ हम, तो आपके कस्टमर्स यूज टू हो जाते हैं कि हाँ इनकी तरफ से कोई पोस्ट आने वाला है, एंड इट विल कम एवरी सेकेंड डे और एवरी थर्ड डे. आपको ही अपना एक पैटर्न डिसाइड करना पड़ता है. जो आपके हिसाब से कंफर्टेबल हो आप उस पैटर्न को बनाएं और उसको यूज़ करें. So keep a pattern, so everybody gets used to it, to follow your pattern. Okay, the post from this business will come every third day. There has to be some pattern in marketing. Fourth tip will be, when you are doing this marketing and you think that every day you will not get time to put some post on Facebook, then there is an option of schedule post in Facebook. If you have time today, you post 10 products today, but give it a different schedule, different date, different time. So it will appear on Facebook. Whether you are online or not, the post will appear there and your customer will get the information. When you are scheduling the post, make it on the same time, on different days but same time. So your customer knows that every 10 o'clock, every third day, 10 o'clock, the post, some product update or post update will be there from this business. That schedule should be there. These are few very basic Facebook marketing tips. Now I will be showing you a advanced version how to go further in business, how to grow further in business with Facebook. What all we can do in Facebook and what all we should do there. So join me there. And again, the chat box is there, the comment section is there. Use it to post your queries and we will try to solve them. So this is where we are going to start. We have seen the simple Facebook marketing tips. Now we are going to see how to use it in a little advanced way. So this is When India group, okay? And I want to create a When India page. Like I was telling you,
आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल प्रोफाइल को डिफरेंट रखें। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यू वांट टू क्रिएट योर बिजनेस पेज, क्रिएट अ पेज यू हैव टू सी। वैसे तो क्रिएट अ पेज यू कैन सी, सर्च इट, आपको इजीली मिल जाएगा। इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग इट, easiest way is you visit any of the page on Facebook। ये एक कोकोविंग जो है ये फेसबुक पेज है, इसमें आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ आपको ये ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट अ पेज, ऐड योर बिजनेस टू फेसबुक। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, वी विल क्लिक इट, विल सी हाउ इट विल लुक। पेज नेम, it is asking for the page name, so I am creating this page for when India e super mall। so we gave the name of the page। आपका जो भी बिजनेस नेम है you can easily give it there। कैटेगरी, ये किस कैटेगरी में आएगा, so you can choose your categories, there are multiple categories available over there। आप इसमें होम डेकोर, आपकी जो भी कैटेगरीज हैं आप मल्टीपल उसमें चूज़ कर सकते हैं। फूड एंड ड्रिंक एंड मे बी हम लोग के में, क्योंकि वी आर, एज आई टोल्ड यू, वी आर हैविंग ई सुपर मॉल, वी आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, सो वी आर हैविंग लॉट ऑफ ऑप्शंस ओवर देयर। जो आपके हिसाब से आपके बिजनेस को सूट करता है, आप वो यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी क्राफ्ट, it can be art and craft shop, it can be art gallery or home decor, and we can choose 3 categories at maximum। okay, so I have selected home decor, food and drink, clothing shop here। you can choose as you require। अब हमको यहाँ पे description देना है, what is our page about। so I'll say when India is offering multiple homemade products and we support vocal for local। आपका जो भी बिजनेस का डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ दे सकते हैं। यू कैन सी वॉट एवर डिस्क्रिप्शन यू वांट टू गिव देयर, यू कैन चूज। ओके, नाउ आई विल क्लिक क्रिएट अ पेज। यू कैन ऐड मोर डिस्क्रिप्शन ऑल्सो देयर, यू हैव 255 कैरेक्टर्स टू बी एडेड। आप उसमें कुछ भी आपके जो डिटेल्स हैं आप ऐड कर सकते हैं इसमें। क्रिएट अ पेज, इट्स वेरी सिंपल, हार्डली टेक्स फ्यू मिनट्स एंड योर पेज विल बी क्रिएटेड। देखिए, यू कैन नाउ ऐड इमेज टू योर पेज, हमारा पेज क्रिएट हो गया। सच अ सिंपल थिंग टू डू। नाउ इफ यू वांट टू सी अवर पेज, तो ये हमारा यहाँ पे पेज आ रहा है, ये हमारा पेज आ गया है। ये हमारा हेडर इमेज है जिसको कि मैं एडिट कर रही हूँ। आपके पास अगर कोई इमेज है तो आप उससे अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में जो आपकी पिक्चर्स हैं उसमें से भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपके ये पेज का हेडर हो गया। ओके, सेव चेंजेस। आप इस फोटो को भी लेटर ऑन एडिट कर सकते हैं। अब आप इसमें देखिए, आपके पास ऐड अ बटन है। इस ऐड अ बटन में आप क्या चाहते हैं, इफ समबडी क्लिक्स ऑन इट तो आप क्या चाहते हैं, यू कैन सी बुक नाउ, कॉल नाउ, बाय अ गिफ्ट, कॉन्टैक्ट अस, जो भी चीज़ आप देना चाहें। इफ़ यू वांट देम टू सेंड यू मैसेज और सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज, दैट ऑल्सो कैन बी डन। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप उसमें एक व्हाट्सएप मैसेज का ही ऑप्शन दें, जिससे कि लोग अगर आपको यहाँ पर भी, फेसबुक पर भी आपके कमेंट करते हैं तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा, दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू ओवर देयर। अदर देन दैट, सेंड अ मैसेज इन इनबॉक्स ऑल्सो इज़ देयर। वेबसाइट पर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कॉल नाउ में भी आप नंबर दे सकते हैं, या फिर आप ईमेल भी करवा सकते हैं। इफ़ आई टेक सेंड ईमेल,
तो इसमें मैं यहाँ पर वेन इंडिया का ईमेल आईडी दे दूंगी एंड आई विल सेव इट. सी इट स्टार्टेड शोइंग एडिट सेंड ईमेल. मतलब अब जब व्यूअर देखेगा तो उसको सेंड ईमेल दिखेगा इफ दे वांट टू कॉन्टैक्ट अस. यहाँ पे आप अपना लोगो भी अपलोड कर सकते हैं. यू वांट टू चेंज इट, वॉट एवर इज योर कंपनी लोगो, you can change it from here. It's very simple to do and it don't take much time. डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं. ये जहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन वगैरह पूछता है तो आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए. यू शुड ऑलवेज प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शंस ओवर देयर बिकॉज वॉट एवर यू राइट एनी थिंग कैन कम अप इन द सर्च engines. So you should not miss the opportunity over there. See here it has changed. This is how we create it. So simple to do it. You can invite your friends to like the page or start sharing on it. Before inviting your friends, I will suggest you that आप इसमें कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह अपलोड कर लें. अभी आपको दिख रहा है इवेंट, रिव्यूज़, वीडियोज़ एंड मोर पे आपको फोटोज़, अबाउट, कम्युनिटी वगैरह सब ग्रुप्स वगैरह दिखाई दे रहा है. अब हम चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है हमारे लिए, दैट इज़ टेम्पलेट्स एंड टैब्स. यहाँ पे जब हमने अपना पेज क्रिएट करा था, then we were able to see events and reviews. If I don't want them on my page, I will I'll just show it to you. देखिए यहाँ पे हमारे events दिख रहे हैं, events and reviews and videos. What I am saying is I don't want to see the events there because I am not planning any event right now. It can be an offline event or an online event. Okay, so anything can be there, but right now I don't want to show it. तो अभी आपको ये इवेंट दिख रहा है. रिफ्रेश करा हमने तो देखिए इवेंट्स टैब चला गया वहाँ से. सो आई डोंट वांटेड द इवेंट्स ओवर देयर. अगर आपको अपने वीडियोस दिखाने हैं तो आप कर सकते हैं. अगर आपने कोई प्रोफाइल वीडियोस बनाए हैं, फोटोज़, अबाउट अस, कम्युनिटी, अगर आपको ग्रुप दिखाना है, देखिए उसमें यहाँ पे तो ग्रुप दिखाना है या नहीं वो भी हम हटा सकते हैं. शो लाइव वीडियोज़ अबाउट योर पेज, वो आप पे डिपेंड करता है. अगर आप दिखाना चाहें देन यू कैन, इट्स अ टॉगल स्विच. आप क्लिक करेंगे इमीडिएटली इट विल बी एक्टिव. सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज़ यू कैन चूज़, you have job or offers or anything you can choose from here. That is the template and the tab page. Where we want to go now is we want to create a shop. This is what I want to do because I have a business. I want to show my products to the people. So I said shop. And here now, as there are a lot of tabs here, we are not able to see. So I'll switch off some other ones, like I don't want reviews over there. Here, what we can do is I want to bring the shop up. I want these things before, these things to appear after shop. So I'll scroll it up. Okay, so I've changed the sequence here. Now let's see if no shop is available here. I'll just refresh it and you can see the shop is available now. Okay, now what I'm going to do in my shop is I will post my products over there. This is what I wanted to do. So I go to my shop, which is empty right now. It is asking me seller agreement, shop section. I'll continue. I want people to message me to buy, or if you want them to go to your another website for it, you can do that also. Check out on the other website, because right now Facebook shop is not having the payment gateway in India as of now. They may come soon, but right now they are not having.
So message to buy. Indian rupees, it is asking you currency, setting up your shop, which currency you want it in, and then say save. Okay, now we'll add the product. So you can add a product, you can add the video of the product also. I want to select from my computer, so I'll go and let's see, I want to upload this one of the product, and I've selected it and use the photo. It's Sahil washable carpet for home use. So I wrote a detail about my product and I wrote the price, which is in INR. This product, if you are having the product on sale, that also you can do. I'll show it in your next product. So description you can add washable carpet, size of carpet 4x6. So all details what you want to show, you can show it here. Share this product on your page. Yes, I want to share this product on my page. Whether it is in stock or it is out of stock, that also you can manage it here. Now this is what I was telling you, public or unpublished. I want to publicly put the product. Condition is new, refurbished, used, use good, or like new. My product is new, so I'll say add a product. Okay, now I will add one more product. Let's see what I want to add now. So I'll select this product. I have selected use product, use the photo. This is another product what I am adding. You can add the Coco Wing, Coco Pit soil conditioner is my product. The price of the product is 160 rupees and I want to put the product on sale, so I have put it on sale for 98 rupees. Now the description of the product, whatever are the details. So, and yes, I have given the description. I say share this product on my page. It is in stock, public, it's new condition, and I add the product. It is so simple, and my product is my shop is created. Now here I'll see so next time if I, so here I am, and next time when somebody wants to shop with me, I can directly send them my page, Facebook page directly to them, where my products will be visible. Now I'll say view as visitor. So when I view as visitor, this is how my page and my shop will look like. This is my page, and if they want to shop, so here are my products. You can keep on adding the products. See, here it is showing the sale product also, the other product also, and you can keep on adding the product. This is a very simple way, and it gives a better look to your business. You can put as many product as you want. जितने भी आप प्रोडक्ट चाहते हैं आप इसमें अपलोड कर सकते हैं. तो अगर आप अपने अलावा किसी और के भी प्रोडक्ट इसमें तो जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं, जो भी आपके कैटलॉग में आप ऐड करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट्स को, आप वो यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं. और जैसे कि इसमें आपने देखा, वी कैन से वेदर इट्स इन स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. अगर आपने कोई प्रोडक्ट रखा है जो कि सेल आउट हो गया, तो यू कैन से आउट ऑफ स्टॉक ऑल्सो.
So this is the advanced version how you should be using the Facebook actually. Without creating your e-commerce website, you can have it here. And once the people contact you, you can ask them to pay on in your bank account or Paytm or whatever. So do try these things out. So if you have any queries, you can get back to us. If you want to add some more products, you can let us know. Whatever products we have, we can share it with you, and we can help you grow your business. So all the best.